welcome to Kashmir Now. I'm your host Uzma Jafri. Let's take a look at some of the stories of this week's episode. Protests rock illegally occupied Gilgit-Baltistan as rising inflation batters life. Teachers in illegally occupied Gilgit-Baltistan decry corruption and nepotism in education department. Women in far-flung areas of Pulwama get skill training under NRLM scheme. Farmers in Doda boost their income with lavender farming. And later in our section of Incredible India, we'll take you to Odisha to witness the celebrations of Rajyo festival. The region of illegally occupied Gilgit-Baltistan is grappling with inflation. The cost of almost all items has touched a new high. People are struggling to fulfill their basic needs with the income they earn through their menial jobs. Protests have been going on for long across the region. Having reached saturation, people are not ready to call it a day this time. We have a report. Local residents in illegally occupied Gilgit-Baltistan have been continuously protesting against the state-inflicted inflation that has further worsened their already oppressed life. The skyrocketing price of almost all the items has severely hit their domestic budgets. A large number of people in the region who were already reeling under the state of abject poverty, inflation has turned their life into a living hell. While demonstrating, protesters blamed all the political parties of Pakistan for exploiting poor people. They said they will not bow down this time and make their voice reach to every oppressed. पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीटीआई हो, ये सब के सब लीड क्लास के जो लोग हैं उनको गरीबों का कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो हाईफाई गाड़ीज में बैठ के एसी के गाड़ीज में बैठ के उन्होंने जिस बंदे ने आज तक सूरज तक देखा नहीं है, उसको जिसने आज तक कोई सामान परचेज किया हुआ नहीं दुकान से, उनको क्या पता गरीबों का क्या गरीब कैसे जिंदगी गुजारते हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी इदारा हो, सब के सब लुटेरे, सब के सब मुजरिम, सब के सब जालिम है। आज ये एहतिजाज, ये मुख्तसर लोगों का ग्रुप, ये कारवान बढ़ता जाएगा और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम जितने भी मजलूम हैं, मजलूमों तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। People of Gilgit-Baltistan have been for years bearing the brunt of Pakistan's exploitative policies. They are repeatedly subjected to discriminations, where they are made to pay more amount for almost all goods and services, despite a consistently plummeting per capita income. And now this price hike of all the commodities, especially petrol, has come as an appalling blow that has battered their lives. Several organizations across Gilgit-Baltistan have come out on roads to demonstrate against the government and display their frustration. एहतिजाज है ये सिविल सोसाइटी बाल्टिस्तान की जानिब से जो 3 दफ़ा इस पीडीएम हुकूमत ने आवाम पर जो पेट्रोलियम जो बम गिराया है उसके खिलाफ एहतिजाज था और इंशाल्लाह ये एहतिजाज अब मजीद रुकने वाले नहीं है, आगे आगे ये एहतिजाज बढ़ते जाएंगे। मुफ्ता इस्माइल ने जो पेट्रोल बम इस गरीब आवाम के ऊपर गिराया था उसके खिलाफ ये एहतिजाज की कॉल दी थी सिविल सोसाइटी ने। महीने के अंदर पेट्रोलियम मसूनियात में 85 रुपये इजाफा करके गरीब आवाम को मुकम्मल तौर पर यानी कि मफलूज करके रख दिया है इस हुकूमत ने। While Pakistan has been witnessing economic challenges owing to its incompetent policies, the region of Gilgit-Baltistan, which is already marginalized, has borne the major brunt of high inflation.
The economic losses being faced by Pakistan due to policy paralysis are compensated from its illegally occupied territories of Gilgit-Baltistan and POK. And this sudden escalation in the prices is just one aspect of its exploitative designs. At one side, where people of illegally occupied Gilgit-Baltistan are suffering due to inflation, on the other side, the corruption and nepotism prevailing in the government departments is adding to their woes. To protest against the same, recently teachers in Gilgit-Baltistan held a demonstration against the irregularities in filling of teachers' posts in the region. We have a report. A group of teachers along with their students recently blocked the roads in Gilgit to protest against the discrepancies in filling of the teaching posts in Gilgit-Baltistan. The protesters were especially BECS or Basic Education Committee school teachers who have not been regularized till date. A number of activists as well as civil society members also joined the protest. While talking about BECS, the demonstrators said that these schools were started by the government in 1995 when a total of 14,064 teachers were appointed in them. Though they were told that they will be regularized very soon, but till date nothing tangible has been done. A few times posts were created, but owing to nepotism and corruption in education department, deserving candidates could never get a seat. This time too, when 310 posts have been created for BECS teachers, the same is being repeated. हम 1464 टीचर्स के लिए 2009 से अब तक लड़ते हुए आ रहे हैं। एसोसिएशन ने मेहनत करके इस्लामाबाद तक जाके 750 पोस्ट क्रिएट करके वहाँ से हमने लाए थे। फिर उन पोस्ट पे हमारे यहाँ के जो है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 750 पोस्ट पे बिल्डिंग बेस बना के अपने रिश्तेदारों को जो घर में बैठे हुए थे, तनख्वाह घरों में ही बैठ के खा रहे थे, अपने रिश्तेदारों को इन करके उन पोस्टों को 750 पे अपने रिश्तेदारों को नवाजा। फिर हम खामोश रहे, चले कोई बात नहीं है, बिल्डिंग बुनियाद है तो हम उस पे खामोश रहे। उसके बाद फिर हमने मेहनत किया, फिर इस्लामाबाद गए। हम खुद एसोसिएशन वाले 2 महीना वहाँ बैठे। फिर वहाँ से 310 455 पोस्ट आए हैं। इनमें से 310 जो है ना नॉन फॉर्मल BECS बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स के नाम पे जो है ना मखसूस हमारे नाम पे फंड के साथ क्रिएट हो के पोस्ट आए हैं। अभी फिर वही एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले अपने रिश्तेदारों को देने के लिए तैयार है, हमसे छीन रहे हैं। Corruption, nepotism and bribery have always remained the prime causes for increasing unemployment and underdevelopment in Gilgit-Baltistan. Government institutions have spawned a culture where filling of posts is made based on personal acquaintances, sectarian lines, bribery and other illegitimate practices. The GB administration has completely failed in facilitating the deserving candidates, and as a result, people in the region have to come out on roads again and again to demand what belongs to them. रियासत की जिम्मेदारी प्लाट्स पे कब्जा करना, ज़मीनों पे कब्जा करना तो नहीं है, ये यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करना है। वो फाइनेंस डिवीज़न में बैठ के बजट को खुर्द बुर्द करने की मीटिंग से निकल आए, आके यहाँ इनकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो अदा करें। और इन स्कूलों को जाहिर है हम गिलगित बल्तिस्तान में स्कूलों की कमी है तो इन्होंने इस्टेब्लिश की। 1995 के इस्टेब्लिश स्कूल्स आज तक ये लोग बेरोज़गार हैं, इनको पक्का नहीं किया जा रहा है। अगर पूरे इदारे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इन बेचारे स्कूल्स के जो बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल वालों की क्या गलती है। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, आए और इनके साथ मुज़ाकरात करे, इनके मामलात को हल करे। It's not just the education, but almost every department in illegally occupied Gilgit-Baltistan is reeling under the corrupt practices of its higher officials
who are nothing more than the sycophants of Islamabad. They appoint people as per their whims and fancies, due to which many deserving people lag behind, and thus serving the main reasons for Gilgit-Baltistan's underdevelopment and backwardness. Next, we move on to Jammu and Kashmir, where administration is on a mission to make its women self-reliant by investing in their livelihood and helping them to unleash their potential. Moving on the same lines, a tailoring cutting center has been established in Pulwama, where a number of young girls and women are getting trained and heading towards the path of financial independence. They say any society that fails to harness the energy and creativity of its women is at huge disadvantage in the modern world. Therefore, it becomes important to provide opportunities and platforms to help women to learn new skills or hone the existing ones. Considering the same, J&K administration keeps on taking a number of initiatives to empower women by way of making them independent. The recent one being the establishment of Tailoring Cutting Center in Pulwama, where skill development training is being provided to girls and women from far-flung areas. It has been set up under the centrally sponsored scheme National Rural Livelihood Mission, or NRLM, which is being run in the Union Territory as Jammu and Kashmir Rural Livelihood Mission, or Ummeed. The centre has been equipped with all the required machinery and the trainees are taught free of cost. अगर वो लोग आएंगे यहाँ मुफ्त में सिलाई सीखेंगे। हमने NRLM ने हमें मशीनें दी हैं, 6-6, 7-7 मशीनें दी हैं कि उन बहनों को भी रोजगार मिले। अगर वो लोग सीखेंगे, 3 महीने सीखेंगे, 4 महीने सीखेंगे, वो भी अपना रोजगार अच्छे से चलाएंगी। एटलीस्ट अपना खर्चा, क्योंकि औरतों को भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो अपना खर्चे भी बहुत सारे अच्छे तरीके से चलाएंगे। हम NRLM का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमने ऐसे मौके दिए, हमने इस स्कीम से हमको नवाजा है कि गरीब औरतों को भी मौका दिया आगे बढ़ने का। हम गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। Around 15 to 20 ladies who have formed a self-help group are getting trained at this center by a well-qualified resource person. They even get paid for the finished products they provide to the center. Once they are trained, they can either acquire a job for themselves or start their own business. In case they need financial help, they can derive loans up to Rs 3 lakhs at 7% interest rate under NRLM scheme. Trainees are effusive in their praises of government for introducing such a scheme which is helping them to become self-reliant. NRLM ने हमें सिलाई मशीन दी, सिलाई सेंटर दिया है यहाँ हम लड़कियों को सिखाते भी हैं, खुद भी सीखते हैं। हम दिन में 1 सूट 2 सूट सिलाई करते हैं। 300 का 1 सूट है, 1 सूट की सिलाई 300 में लेते हैं। 2 सूट की सिलाई 600 हम दिन में कमाते हैं अच्छी तरह। इस 600 रुपये से हम अच्छी तरह अपना खर्चा निभाते हैं। इसलिए हम NRLM से शुक्रगुजार है, क्योंकि इसने हमें एक ऐसी स्कीम दी जिससे हम बेरोजगार नहीं रह गए, हम रोजगार रह गए, हम अपना खर्च। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल।
सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चर्चा सब उठाते हैं इसी से, और भी बहुत सारे फायदे दिए हैं एनआरएलएम ने। ये यहाँ पे हम सिलाई सेंटर है और भी दुकानें लगाए हमने, हम वुमेनों ने सब कुछ, और भी कारोबार है, सब्जी वब्जी लगाती है यही एनआरएलएम के थ्रू से। Under the Ummeed program in Jammu and Kashmir, women are not just getting skilled but are also starting their own ventures and making good profits. Even in the most far-flung areas of the territory, they are emerging as entrepreneurs and ranging from garments to cosmetics to agriculture. They are slaying in almost every business. Ummeed, as the name suggests, is truly emerging a ray of hope for a number of rural women in Jammu and Kashmir to achieve their dreams and progress towards a happier and independent life. जो औरतें इस उम्मीद के साथ जुड़ी हुई है, नाराउन के साथ जुड़ी हुई है, इनका जो आज से पहले 5 साल जो इनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा पीछे थे। इनको ये नो-हाउ नहीं था कि हमें जो हमारे पास अगर कुछ पैसा है इसको क्या करें, कहाँ करें, किस में हम यूटिलाइज करें। आज माशाअल्लाह शुक्र खुदा का इनके पास पूरा नो-हाउ है कि अगर हमारे पास कुछ पैसा आता है, चाहे वो गवर्नमेंट की एंड से आता है, चाहे ये इनका अपनी सेविंग है, इनको पता है कि हमें कहाँ पे किस तरह से लाइवलीहुड जनरेट करना है, जिससे हमें अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होके हम अपने मतलब जो परिवार है उनको कैसे आगे बढ़ाए, उनको कैसे पाए। Ummeed scheme is mandated to reach out to all the poor families, link them to sustainable livelihood opportunities and nurture them till they come out of poverty and enjoy a decent quality of life. It is a great initiative by the central government that is not just helping women in Jammu and Kashmir to become more skilled, but it's also instilling confidence in them. The cultivation of aromatic plants in Jammu and Kashmir is picking up pace with government's intervention. At present, the Doda district of the Union Territory has become the flag bearer of this purple revolution. Many farmers in the district, including women, have switched to lavender farming and are reaping huge profits besides contributing to the aroma mission. The cultivation of aromatic plants is bringing in the scent of profit for Jammu and Kashmir farmers. Many of them have successfully embraced lavender cultivation, thereby giving boost to purple revolution. In Doda, more than 1,000 farmers across villages have switched from traditional farming to lavender cultivation, as it is more profitable. Bharat Bhushan, hailing from Khilani village of Doda, was the first one to do so. He started its cultivation in 2010, when the Jammu and Kashmir's Tourism Department introduced the plant in the area for beautification. Later in 2016, when the central government introduced Aroma Mission, many farmers, seeing the success of Bhushan and help provided by the government, also shifted to lavender cultivation. पहले 12 साल जब हुए इसको 2010 से, तो शुरुआत में क्या था 2016 तक हम इसकी नर्सरी लगाते थे, किसान हमसे ख़रीद के लेते थे, और जो किसान हमसे ख़रीद के लेते थे उनको फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती थी, और 5-6 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। आज भी चल रहा है वैसे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ट्रिपल CSR ने अरोमा मिशन शुरू किया, तो अब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ्री में प्लांट
मिल रहे हैं, लेकिन जो किसान अभी भी हमसे पेमेंट पे ले रहे हैं तो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको सब्सिडी मिल रही है। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है नर्सरियों पे कर रहे हैं, क्योंकि जितनी नर्सरियाँ हमारे पास ज़्यादा होंगी, हमारे पास प्लांटिंग मटीरियल होगा, उतने किसान जो हैं उनको फ़ायदा होगा। The Aroma Mission was launched by the Council of Scientific and Industrial Research, or CSIR, in 2016 to popularize aromatic crops and provide end-to-end technology and value addition solutions to farmers across the country. Under the mission, first-time farmers are given free lavender saplings, while those who have cultivated it before are charged with very minuscule amount. Seeing the profitability of lavender, whose oil seeds are sold of at least 10,000 rupees per kilogram, many women, especially in Doda district, have also entered into its cultivation. ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद काम है। हम अपने घर के काम के साथ ये अपने घर का खर्चा भी निकाल लेते हैं ये काम करके। पहले हम मक्खियाँ लगाते थे तो उसमें हमें इतना फ़ायदा नहीं होता था। जैसे आज हमें 75% फ़ायदा हो रहा है, तब हमें 25% तक भी फ़ायदा नहीं होता था। आज हमें 100 में से 75% तक फ़ायदा हो रहा है। ये आज जो यहाँ पे औरतें हैं, ये 14 से 15 औरतें हैं और इससे ज़्यादा भी आती, 20-25 तक औरतें भी होती हैं। आज यहाँ पे थोड़ा काम था, इसीलिए थोड़ी औरतें आई हैं। In Jammu and Kashmir, lavender is grown over an estimated area of 900 acres with an annual production of 3,000 kilograms of lavender oil. The farmers of Doda as well as other districts are helped by CSIR, Indian Institute of Integrative Medicine Jammu, to sell their produce. It has even set up distillation units to extract lavender oil. The floriculture department too is playing a keen role in giving boost to lavender cultivation by creating awareness among farmers. डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर इसके लेवेंडर की कल्टीवेशन के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है, अवेयरनेस कर रहा है, जिसमें किसानों को विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट में भी जाके एक्सपोजर विजिट्स और ट्रेनिंग अवेयरनेस करवाते हैं, ताकि किसान जागरूक हो सकें कि उनकी जो डाइवर्सिफिकेशन से लेवेंडर की कल्टीवेशन अडॉप्ट करने से उनको कितना फ़ायदा होता है। Jammu and Kashmir is believed to have more than 5,000 medicinal and aromatic plants. Of these, about 4,000 are found in the Kashmir Valley. The region provides the best climatic conditions conducive to lavender farming, which has seen a surge in the past 10 years. Next, we move to the section of Incredible India, where we will take you to explore the 3-day-long Rajyo festival that was celebrated recently in Odisha's capital, Bhubaneswar, amid huge fanfare. Adding the bright colors to the landscapes of Odisha, this festival commemorates the fertility of Mother Earth and womanhood. Let's have a look. Young girls and women decked up in their best of dresses and riding on swings while singing and dancing were the major scenes in Orissa during Rajyo festival that was celebrated recently with huge pomp and show. This 3-day-long festival is the most important carnival in the state that celebrates menstruation and womanhood. It is believed that Mother Goddess Earth menstruates for those 3 days and hence she is given a ceremonial bath on the 4th day. As a mark of respect towards the earth during her menstruation days, all agricultural activities like ploughing, sowing is suspended for the 3 days as Mother Earth is expected to be going through rejuvenation. ये हमारा साधारणतः ओडिशा का एक मुख्य पर्व है, जिसमें भगवान जी का पूजा तो नहीं होता है, लेकिन ये माने खास करके ये लड़कियों के लिए मनाते हैं। और ये हमारा जैसे कि बोलते हैं कि हमारा ओडिशा में 3 दिन के लिए ये पृथ्वी माता रजस्वाला होता है। जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं इसको,
मासिक धर्म बोलते हैं। तो वैसे ही माने पृथ्वी माता का रजवाला को बोलते हैं कि वो रज मनाते हैं। Celebrating the spirit of womanhood, this festival is of utmost importance to women who pamper themselves by wearing new dresses, applying alta and dressing up with fashionable accessories. During the 3 days, women are given a break from all household work and they spend the entire day having fun on rope swings, playing indoor and outdoor games, singing folk songs and eating scrumptious food. रोज़ों में हम नए कपड़े पहनते हैं, हमारे घर में पकवान बनता है, फिर हम पीठा खाते हैं और हम झूला झूलते हैं। लड़कियां तो बहुत सज संवरते हैं और पाँव में अलता लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं माथे पे, और डोली जो ये सब डोली है ना, इसमें बहुत माने झूलते हैं। और औरत सब सज के संवर के वो ताश लूडो खेलते हैं और ये क्या बनाते हैं, और पोड़ा पिठा खाते हैं, चकुली पिठा खाते हैं। ये हमारा उड़ीसा का एक मुख्य पर्व है। Each day of the festival has its own name and significance. The first day is called Pahili Rajo. Second day is Rajo Sankranti or Mithun Sankranti, and the third day is called Basi Rajo. During this festive occasion, various local delicacies, especially pithas like poda, chakuli, arisa, kakera, chena and other sweet items are also prepared that double the fun of revelers. Besides, sweet beetle witness a huge demand during this period as it has become a must-have for everyone during Rajo. बहुत सारे तरह के पीठे मिलते हैं हमें, जैसे कि चकुली पीठा एंड मोंदा पीठा, पोड़ो पीठा, खीरो पीठा, ऐसे बहुत सारे के मिलते हैं। Though the country still struggles with the taboos related to menstruation, this Rajo festival signifies how menstruation, fertility and womanhood are the cause of celebration and not shame in Indian culture. That's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team. हमने फसल बीमा योजना को